Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So SIDBI Grade A exam is over. Now, one of the questions that comes to our mind is what will be cut off? What will be level of cutoff? Now, many of you have given your responses, how many questions they have attempted. As you are aware, the number of vacancies are very less this time, and this exam is happening after many years. So few candidates are aware about the level of competition. When vacancies are low, very less number of people may be called for interview. So last time they have called around 1,000 people for interview. This time they may call 400, 500 or 600 people for interview because this time vacancies are lower. So take a case of SC candidate. There are 16 seats. If they call 4 times, they may invite just 64 candidates on all India basis for the interview process. ST 7 seats, they may call just 28 people. OBC 24 seats, 96 people. 10 EWS 40 people. And general there is a 172 they may call if they call 4 times. It can be higher if they call 5 times. It can be higher if they call 6 times. But usually they call 3 to 4 times. But if they want to have a bigger sample, they may call 5 times, 6 times. Still that number will be very, very less. Now the question remains whether your attempts are sufficient enough to fall under this less number of candidates, that is cutoff. Cutoff is nothing. Cutoff is that each and every candidate who has given this examination, his marks will be placed in a Excel sheet. And if they have to call, say, 100 people, so they will see the top 100 people in that category where the last candidate is there, where 100th candidate is there. So they will invite this this fellow and all above people for the interview process. And the cutoff will be dependent on the scores of that particular person. And that's why as less number of people will be called. So you can't expect a low cutoff. Cutoff has to be higher than preceding years. And if we look at the number of attempts are in the range of 120 plus. Some people. Then there is a range 110 to 120. So since very few people will be called, my own perception is 120 plus. Maybe the attempts through which you can expect that you are in the race. But still, it can surprise you at a very, very high level also. So these type of examinations, anticipating whether I will get an interview call or not is very, very difficult task. And secondly, interview of such exams is not similar to IBPS interviews. These are very, very deeper sort of interviews. So the moment you get the call for interview, you have to acquire knowledge which is thick and thin on the activities which is carried out by SIDBI. That means you must have thorough knowledge of economy, thorough knowledge of MSMEs, thorough knowledge of small scale sector and government policies thereon. So the preparation of interview will be totally different. Totally different. It will not be like IBPS or SBI PO interviews. The examination pattern may appear to be similar, but it is nowhere similar. In this written exam cutoff also, your descriptive paper will play the most crucial role. Although they will check descriptive paper only of those people, those are having a score higher than something which they may decide in the objective paper. But the merit will be determined based on your score in objective plus descriptive, and the merit will be declared as per marks out of 250. So if you have done good in descriptive and along with that you have done good in objective, you may be called for the interview. That is my feeling. So we will not give any number, but yes,
very few people will get the call for interview, that is sure, because the number of vacancies are less. And if you see your performance much higher than all competitors, then you can expect the call. But if your performance is similar to your competitors, you may not get the call. That is my view, because I am always truthful. I don't try to give you false promise, yes, you prepare for interview, there is very good chance. No. There is very less chance people will get to go for interview because vacancies are less. Only few people will be called for interview. That is a hard reality and we have to accept it. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज SIDBI का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आपने अपनी परफॉर्मेंस भी बता दी और अब सभी जगह डिस्कशन शुरू हो गया कि क्या कट ऑफ होगा, क्या मेरा नंबर आएगा, क्या मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये समझनी है कि सिर्फ 100 वैकेंसी है। अगर हम यूजुअल पैटर्न से चले जहाँ 3 से 4 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो संभावना देखिए क्या है। 16 वैकेंसी हैं SC की, तो 64 लोग कॉल हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ST की 7 वैकेंसीज हैं, 28 लोग कॉल हो सकते हैं। OBC की 24 वैकेंसीज हैं, 96 लोग कॉल हो सकते हैं। EWS की 10 वैकेंसीज हैं, 40 लोग कॉल हो सकते हैं। जनरल की 43 वैकेंसीज हैं, 172 लोग कॉल हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ये तब है जब 4 गुना होंगे। 5 गुना होंगे तो और थोड़े से बढ़ जाएंगे कैंडिडेट, 6 गुना होंगे और थोड़े से बढ़ जाएंगे। पर इसमें हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन कई बार कोशिश करती है सैंपल को बड़ा करने का। उससे क्या होता है कि उनकी चॉइस इंटरव्यू में वाइडर हो जाती है, पर वो कैंडिडेट के लिए नुकसानदायक ही साबित होता है, क्योंकि उससे लोअर नंबर वाले का भी इंटरव्यू कॉल आ गया तो हायर नंबर रिटर्न में लेके भी कई बार वो पिछड़ जाता है। तो अगर कम लोग कॉल होते हैं तो जो रिटर्न में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको एडवांटेज हो जाता है, पर जब ज़्यादा लोग कॉल होते हैं तो जिन्होंने रिटर्न में अच्छा परफॉर्म किया होता है कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग कॉल हुए तो जो आखिरी कैंडिडेट है स्कोप तो उसका भी है, क्योंकि जो इसके अंदर गैप होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर 100 कैंडिडेट भी बढ़ाते हैं तो आधा नंबर ही अगर कट ऑफ नीचे गिरा देंगे तो 100 कैंडिडेट और मिल जाएंगे उनको, क्योंकि हर नंबर पर सैकड़ों लोग खड़े होंगे और बुलाने कुछ ही 100 हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो 100 कैंडिडेट भी और लेते हैं तो कट ऑफ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, 0.25 या हाफ मार्क्स का फ़र्क आ सकता है। तो कट ऑफ तो हर हालत में पहले सालों के मुकाबले भी हायर होगा, अदरवाइज भी हायर होगा। अब अगर हम देखें कि अधिकांश लोगों ने किया क्या ऑब्जेक्टिव के अंदर, काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं जो 110 और 120 के बीच हैं। कुछ कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं जिनकी 120 से ऊपर परफॉर्मेंस है, और उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट 110 से नीचे भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम 120 से ऊपर का फोकस देखें तो वहाँ ऐसी संभावना लग रही है शायद ये लोग जो 120 से ऊपर करके आए हैं प्लस जिनका डिस्क्रिप्टिव अच्छा हुआ है वो शायद रेस में अल्टीमेटली खड़े हैं। कहीं होने को 110 वालों का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो बहुत डिफिकल्ट है। पर अगर हम देखें क्योंकि कम लोग बुलाए जाने हैं तो कट ऑफ नीचे आ जाए इसकी संभावना काफ़ी कम होती है, क्योंकि कट ऑफ क्या है, जो भी लोग आज एग्ज़ाम देके आए हैं उनके नंबर एक सिरे से एक एक्सेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अब फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, 100वां कैंडिडेट, अब मान लो 100 लोगों को बुलाना है तो 100वें कैंडिडेट का जो नंबर है प्लस उससे जो ऊपर के लोग हैं वो आपका कट ऑफ बन गया। अब क्योंकि कम कैंडिडेट ही बुलाने हैं तो कट ऑफ स्वाभाविक रूप से हायर होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। और अल्टीमेट कट ऑफ कैसे निकलना है, जो आपका प्री का परफॉर्मेंस, प्री में जो एग्ज़ाम के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव की परफॉर्मेंस है प्लस डिस्क्रिप्टिव की परफॉर्मेंस है, दोनों मिला के कट ऑफ निकलना है। ये जरूर है डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल उन्हीं लोगों का चेक होगा जिनके ऑब्जेक्टिव में एक सिरे से ऊपर नंबर होंगे। वो सिरा क्या है वो ये SIDBI डिसाइड करेगा, मगर कट ऑफ तो मिला के होना है। तो जिन लोगों का डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं हुआ वो इसके अंदर कहीं खड़े हो पाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अगर आपका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा हुआ है और ऑब्जेक्टिव भी अच्छा हुआ है तो आप रेस में हैं।
और अगर आपका दोनों में से एक चीज़ भी डावाडोल है तो आप रेस में नहीं है, क्योंकि इस चैनल का काम है सच बोलना। क्योंकि इसके अंदर हम आपको कह देने नहीं हो जाएगा, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर लो, वो गलत बात है। क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज हैं, बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा इंटरव्यू का। इसके लिए हमें साइकोलॉजिकली तैयार रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।